Okay, so let's start. Okay, guys. So software testing. So in this, many things we have already covered. We know that what is the unit testing. We have the integration testing and all this. Anyways, this is a separate chapter as we have already discussed. So topics will be covered: development testing, test-driven development, release testing, user testing. Testing, program testing, we are aware of that. Okay, testing is intended to show that a program does what it is intended to do and to discover the program defects before it is put into use. So we look for the defects in testing. When we test, when you test software, you execute a program using artificial data, like हम 1 2 3 देते हैं, ABCD देते हैं, तो definitely हम अभी तक जो user की data है वो नहीं दी. So you check the results of the test run for errors. Anomalies are information about the program's non-functional attributes. So definitely we look for the anomalies, errors, and problems in this, and same goes for the non-functional attributes की checking भी होती है इसमें. Can reveal the presence of errors, not their absence. So definitely हम जो है testing में errors ही देख रहे होते हैं. So testing is part of more general verification and validation process, which also includes the static validation techniques. Program testing goals to demonstrate to developers and customer that software meets its requirements. So definitely we look for the requirements implementation. हम requirements के base पे ही देख रहे होते हैं. So discover the situations in which the behavior of the software is incorrect, undesirable, or does not conform to its specifications. वही same चीजें हैं कि software जो है कौन सी जो anomalies हैं, incorrect है, वो देख रहे होते हैं. यार specifications जो हैं वो implemented हैं या नहीं, it conformity with those specifications. Validation and defect testing. The first goal leads to the validation testing. You expect the system to perform correctly using a given set of test cases that reflect the system's expected use. So that is looked, and definitely after that it is validated. The second goal leads to defect the testing. The test cases are designed to expose the defects. Test cases in defect testing can be deliberately obscure and need not to reflect how the system is normally used. Okay. So testing process goals हमारे पास हैं. Validation testing है, defect testing है, as we have discussed in previous slide. Okay, validation testing में to demonstrate the developer and system customer that the software meets its requirements. A successful test shows that the system operates as intended. Defect testing में to discover faults or defects in the software where its behavior is incorrect or not in conformance with its specifications. A successful test is test that makes the system perform incorrectly and so exposes a defect in system. वही के वैलिडेशन में हाँ भाई ये स्पेसिफिकेशंस थी, ये फंक्शंस होने चाहिए थे, ये फंक्शंस ठीक से काम कर रहे हैं, ये इट्स वैलिडेटेड. ओके, एंड एवरी फंक्शन, एक एक फंक्शन को क्रिटिकली एनालाइज करना, हर किस्म की डेटा का इनपुट दे के चेक करना कि शायद कोई एरर आ जाए. ओके, सो दिस इज द सिंपल पिक्चर ऑफ द input test data. Definitely look for the anomalies. Input causes the anomalous behavior. वो data देख के system से data होके आएगी, and output में we will look for the outputs which reveal the presence of the defects. Okay, errors जिसको हम कहते हैं. So the verification versus validation. अब verification में क्या है? Are we building the product right? The software should conform its specifications. Validation में क्या? Are we building the right product? The software should do what the user really requires. Okay, so are we building product right? And it's a verification. Are we building product right? The software should conform its specification. जो काम करना था, जो जैसा प्रोडक्ट हम चाहते हैं,
वाकई वो प्रोडक्ट हम सही बना रहे हैं या नहीं, यानी कि उसमें जितनी भी स्पेसिफिकेशंस हैं वो ठीक से इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं। वैलिडेशन में आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट, राइट प्रोडक्ट, कि सॉफ्टवेयर शुड डू व्हाट यूजर रियली वांट्स आर द रिक्वायर्स, यानी कि यहाँ पे काम करने की बात है, डेटा से रिलेटेड बात है। ओके, वो फिर उसमें वैलिडेशन में आ जाती है। अब वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, कॉन्फिडेंस। Aim of verification validation is to establish the confidence that the system is fit for the purpose. सही बना हुआ है और सही चल रहा है। Depends on system's purpose, user expectations and marketing environment. अब जाहिर सी बात है कि सिस्टम किस चीज के लिए बन रहा है, यूजर की एक्सपेक्टेशंस क्या है, मार्केट ट्रेंड क्या है। अब डिपेंड करता है कि मार्केट में अगर वही प्रोडक्ट जो है ना कोई और कंपनी भी कमर्शियल ऑफ द शेल्फ लॉन्च करती है, आप भी वही बना रहे हैं, तो डेफिनेटली कॉम्पिटिटर बढ़ गया। ये मार्केट एनवायरनमेंट को देखना पड़ता है। सॉफ्टवेयर पर्पस, द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस डिपेंड्स ऑन हाउ क्रिटिकल द सॉफ्टवेयर इज टू एन ऑर्गेनाइजेशन। अब जाहिर सी बात है कि पर्पस में कौन यूज करेगा, कौन बनवा रहा है, कैसे वो चला सकेंगे, नहीं चला सकेंगे, यूजर एक्सपेक्टेशंस, यूजर्स में हैव लो एक्सपेक्टेशंस ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर। Marketing environment, the getting product market early may be more important than the finding the defects in the program. अब जाहिर सी बात है कि हम जैसे अल्फा वर्जन लॉन्च करते हैं जल्द ही मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के लिए, भले उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो अल्फा में हमें फीडबैक भी आ जाता है, टाइम भी मिल जाता है, हम ठीक कर लेते हैं, क्योंकि आप समटाइम्स लॉन्चिंग जल्दी करने से बहुत फर्क पड़ता है। लाइक दो कॉम्पिटिटर्स हैं स्मार्टफोन्स में, सैमसंग एंड आईफोन, दोनों की कोशिश होती है। सैमसंग को पता है कि सितंबर में, हर सितंबर में आईफोन एक अपना नया वर्जन लॉन्च करता है, तो सैमसंग की कोशिश होती है कि सितंबर से पहले हम लॉन्च कर लें, भले उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं थोड़ी बहुत, तो वो आगे चल के अपडेट्स आ जाती हैं, ठीक हो जाता है। कि यानी कि ये मार्केट ट्रेंड है, मार्केट एनवायरनमेंट है, और जरूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट के लिए मार्केट एनवायरनमेंट सेम हो। इंस्पेक्शंस एंड टेस्टिंग। अब इंस्पेक्शन और टेस्टिंग जो है दो डिफरेंट चीजें हैं मगर एसोसिएटेड हैं। पहले इंस्पेक्शंस इंस्पेक्ट करते हैं कि भाई ठीक है, ओवरऑल जो है देख रहे होते हैं इसमें एरर्स और सब चीजें। टेस्टिंग में तो हम एक्चुअल डेटा देख के चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। इंस्पेक्शन में हमारे पास, अब इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग में देखें, रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशंस आर इंस्पेक्टेड, software architecture is also inspected, UML design models, systems, database schemas and program में जो कोड है it is tested कि ठीक है, ठीक से बना हुआ है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स के हिसाब से, और बाकी एग्जीक्यूशन भी हो रही है, जो रिजल्ट आना चाहिए था, आउटपुट आना चाहिए था, वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, इट्स गोइंग टू बी टेस्टेड, नॉट इंस्पेक्टेड। Software inspections, so this is the description of inspections. You can go through this advantages of inspections, you can go through this। inspections and testing में difference क्या है वो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम। inspections and testings are complementary and not opposing verification techniques, both should be used during the verification and verification process। Inspections can check conformance with the specification but not conformance with the customer's real requirements। वही के आप देख के इंस्पेक्शन है, इंप्लीमेंट किया, टेस्ट कस्टमर की डेटा देख के चेक किया, तो इट्स अ टेस्टिंग। इंस्पेक्शंस यानी कि ठीक से बना हुआ है और ठीक से काम कर रहा है। इंस्पेक्शंस कैन नॉट चेक non-functional characteristics such as performance, usability, etc। वो तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि टेस्ट हुआ नहीं है, एग्जीक्यूट हुआ नहीं है, तो कैसे इसमें एग्जीक्यूशन टाइम का पता चलेगा, कैसे इसमें परफॉर्म एफिशिएंसी का पता चलेगा, कैसे इसमें सिक्योरिटी और प्राइवेसी का पता चलेगा। ये एक मॉडल ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस। अब आप देखेंगे कि सिंपली the high level abstraction of this figure is we have the test cases, then test cases are definitely designed in the test, these are the designed and definitely वो टेस्ट जब बन गया तो उस पे टेस्ट कौन सी होंगी उसकी प्रिपरेशन होगी।
जब टेस्ट होंगी तो टेस्ट डेटा यूटिलाइज होगी, टेस्ट केसेस हैं, टेस्ट डेटा है, उसके बाद टेस्ट डेटा देके हम रिजल्ट नजर आएंगे, तो रिजल्ट्स होंगे, रिजल्ट्स फिर कंपेयर होंगे और रिपोर्ट्स जनरेट होंगी. दिस इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हियर. सो द टेस्ट डिजाइन टेस्ट केसेस, देन टेस्ट केसेस, हमारे पास एक पूल है टेस्ट केसेस का, then prepare the test data on based on those test cases, then test data is collected. Okay, definitely uh, that test data is going to be implemented into different formats, and then we call it the test results, and those results are compared, and after comparison we have the reports, complete reports of those comparisons. Stages of the testing. So we have the development stage, testing, release testing, user testing. So development testing, where the system is tested during the development to discover the bugs and defects. Release testing may, where a separate testing team tests a complete version of the system before it is released to users. Mostly separate team भी होती है, outsource भी करते हैं, और अपनी team भी release testing जो है एक इस रिलीज टेस्टिंग करती है. मगर नॉर्मली जो इफेक्टिव होती है वो रिलीज टेस्टिंग जो है ना दूसरों से करवाएं हम, क्योंकि आप देखें एक छोटा सा एग्जांपल, समटाइम्स हम अपने ही काम से गलतियां नहीं निकाल पाते, इट्स अ ह्यूमन नेचर. आप देखें व्हाई हम जब व्हेन वी वर इन कॉलेज कि हम एक कोई भी एप्लीकेशन लिखते थे, पैराग्राफ लिखते थे, ऐसे लिखते थे, तो हम किसी और से चेक करवाते थे, टीचर या कलीग, या ताकि अच्छा अक्सर ऐसे होता है कि किसी और से चेक करवाने से हमें एक मतलब ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द एरर्स. ओके, सो जरूरी नहीं है कि रिलीज टेस्टिंग जो है ना आप बाहर से किसी और से करवाएं या दूसरी टीम हो, मगर इफेक्टिव एफिशिएंट रिलीज टेस्टिंग हो जाती है. यूजर टेस्टिंग जो है, वेयर यूजर्स आर द पोटेंशियल यूजर्स ऑफ द सिस्टम टेस्ट द सिस्टम इन देयर ओन एनवायरनमेंट. यूजर टेस्टिंग, यूजर की डेटा देके यूजर के पास ही उसके एनवायरनमेंट में टेस्ट किया जाता है वो सिस्टम. डेवलपमेंट टेस्टिंग. The development testing includes all testing activities that are carried by the team developing the system. So it's very simple. इसमें unit testing है, component testing है, system testing है. All these are done at the development side or the development by the development team. Unit testing एक छोटा सा जो है ना unit बनता है, एक छोटे से programs मिला के किसी भी एक system का unit बन गया, देन यूनिट्स कंबाइन होके कंपोनेंट बनाते हैं, कंपोनेंट जो है कंप्लीट सिस्टम बनाते हैं. ये वही है कि चंक्स में ही डेवलपमेंट होती है, फिर आप इंटीग्रेट करते आते हैं, और ये फिर यूनिट्स इंटीग्रेट होते हैं, कंपोनेंट्स बनते हैं, कंपोनेंट्स इंटीग्रेट होते हैं, तो डेफिनेटली सिस्टम बनते हैं. सिस्टम ये एक एक चीज करते हुए हम इसको जो है अपना टेस्ट करते हैं इंटीग्रेट करके, ताकि श्योर हो कि दो यूनिट्स जो हमने कंबाइन किए हैं, इंटीग्रेट किए हैं, इंडिविजुअल तो ठीक काम कर रहे थे, उनका रिजल्ट भी सही आ रहा था, वो जो है ना अब मिलाने के बाद भी ठीक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. ओके, इसको आगे चल के हम पढ़ेंगे कि रिग्रेशन टेस्टिंग भी इसी से ही रिलेटेड है. Unit testing is a process of testing individual components in isolation. It is defect testing process. Units may be individual functions or methods within object classes with several attributes and methods, composite components with defined interfaces used to access their functionality. ये already हमने बहुत discuss कर चुके हैं, physical वाली class में भी किया था, online में भी, तो बहुत आसान है. जैसा के छोटे से प्रोग्राम्स होते हैं, छोटे से उनके फंक्शंस होते हैं, वो मिला के एक यूनिट बनाते हैं. यूनिट ऑफ फॉर एग्जांपल हम सीएमएस का एग्जांपल लेते हैं. सीएमएस में आपके पास डिफरेंट यूनिट्स हैं, ठीक है, और एक यूनिट हमने ऐड कर दिया कि फॉर एग्जांपल भाई ड्रॉपिंग आउट और फ्रीज व्हाट वी कॉल इट द ड्रॉपिंग रिक्वेस्ट, जो सब्जेक्ट ड्रॉप करते हैं स्टूडेंट्स. ओके, withdraw form, we call it the withdraw, exactly the name in the CMS is withdraw form. Okay, so it's a unit of that simple of that complete component of that CMS. Object class testing हम इसके हैं, whether
का एक सिनेरियो है, एग्जांपल है ऑटोमेटेड, वो भी अपना एग्जांपल है। ऑटोमेटेड टेस्टिंग एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमारे पास ऑटोमेटेड टेस्टिंग जो प्लेटफॉर्म है, हमारे पास फ्रेमवर्क है, वो ऑटोमेटेड टेस्टिंग के लिए मोस्टली यूज है। ऑटोमेटेड कंपोनेंट्स, so set up a part where you initialize the system with the test case, namely the inputs and expected outputs. A call part where you can call the object or method to be tested. An assertion part where you compare the result of the call with the expected result. If the assertion evaluates to true, the test has been successful. If false, then it has failed. So automated में definitely हमारे पास setup है, call है and assertion parts हैं, ठीक है। Choosing unit testing cases, how to, take an example. These cases should show that when used as the component that you are testing does what it is supposed to do. If there are defects in the component, these should be revealed by the test cases. This leads to two types of the unit test cases. The first of these should reflect the normal operation of a program and should show that the component works as expected. The other kind of the test case should be based on testing experience of where common problems arise. It should use abnormal inputs to check that these are properly processed and do not crash the component. Like हम नॉर्मल डेटा तो देते हैं, एबनॉर्मल भी डेटा दे देते हैं। लाइक हम कैलकुलेटर बनाने के में मोस्टली जो एबनॉर्मल हम टेस्ट करते हैं कि डिवाइड बाय जीरो दे के चेक करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से करते हैं, ठीक है। टेस्टिंग स्ट्रेटजीज, partition testing, where you identify groups of inputs that have common characteristics and should be processed in same way, like what we call it the clusters banate hain hum. Guideline based testing, where you use testing guidelines to choose test cases. These guidelines reflect the previous experience of kinds of errors that the programmers often make when developing the components. Partition testing, input data and output results often fall into the different classes where all members of the classes are related. Each of these classes are in equivalence partition or domain where the program behaves in an equivalence way for each class member. The test cases should be chosen from each partition. Partition आगे चल के शायद आप मेरे ख्याल में सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग में भी कवर करेंगे ये आप, वैलिडेशन से रिलेटेड। लाइक वी हैव द पार्टीशन, we define the boundary values in these कि भाई like in Nadra system we have कि भाई the card minimum requirement for the national identity card are 18 years of age. So it starts from 18 to whatever the date. Okay, so this is we have different equivalence partitions are made, and based on those equivalence partitions पे हमारे पास input equivalence input है, equivalence partitions हैं, तो definitely possible inputs हैं, then correct output क्या होगा कि different clusters based or different ना के जो जिस पैटर्न जिस फंक्शनैलिटी के हिसाब से पार्टीशंस बनाई गई हैं। फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं कि लेस देन 4, between 4 and 10, more than 10. So these are again separations and the thresholds defined, number of input values, less than 10,000, between 10,000 and whatever the 99,999, more than 99,999. So these are again, these are the partitions you made. Testing guidelines, these are the general guidelines in this. Again, test software with the sequence which have only a single value, use sequences of different sizes and different tastes, drive tastes so that the first, middle and last elements of the sequence are accessed
test with the sequence of 0 length, and general testing guidelines may choose inputs that force the system to generate all in error messages, design inputs that cause input buffers to overflow, repeat the same input or series of inputs numerous times, force invalid outputs to be generated, force computation results to be too large, too small. ये वही चीजें हैं जो already हम discuss कर चुके हैं कि what we look for the tests. So जाहिर सी बात है कि जो रेंज में हैं वो भी दे के चेक करते हैं, जो नहीं आउट ऑफ रेंज है वो भी दे के चेक कर सकते हैं, कि हम एक स्पेशल कैरेक्टर्स भी दे के चेक कर सकते हैं. हम फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ द आई मीन passwords, हम caps lock small, then we have the special characters. हम हर एक किस्म की जो है ना इनपुट दे के चेक करते हैं, look for the errors. Component testing है उसके बाद हमारे पास कि the components are often composite components that are made up of several interacting objects. For example, in weather station system, the reconfiguration component includes the objects that deal with the each aspect of the reconfiguration. वही कंपोनेंट का भी जो बताया कि विथड्रॉल फॉर्म को भी आप एक यूनिट कंसीडर करें, या इसमें इसको में और कॉम्प्लेक्सिटीज हैं विथड्रॉल में कि फॉर एग्जांपल यही विथड्रॉल फॉर्म स्टूडेंट ने जनरेट किया, सब्जेक्ट टीचर के पास गया, फिर एचओडी के पास गया, फिर वाइस चांसलर डीन के पास गया, फिर वाइस चांसलर के पास गया, फिर एडमिशन ऑफिस या जो एक कंट्रोलर एग्जामिनेशन गया. सो हाउ मच यू आर गोइंग टू मेक इट द that complex. और फिर जो है ना उसके बेस पे जो है ना यूनिट्स जो बनेंगे ना वो एक एक विथड्रॉल फॉर्म जो स्टूडेंट फिल कर रहा है उससे रिलेटेड जो डेटा है वो जाहिर सी बात है एक कंपोनेंट है. एचओडी जो भी उसमें चेंजेस कर रहा है, कमेंट्स दे रहा है, एडिट कर रहा है, वो दूसरा कंपोनेंट हो सकता है. ऐसे ही एक एक चीज अलग अलग कंपोनेंट्स बन सकते हैं, यूनिट्स बन सकते हैं, सॉरी, और कंपोनेंट एक ही है विथड्रॉल फॉर्म है. Okay, then we have the interface testing कि definitely how the interface is. interface में हम generally जो देखते हैं कि एक जो है हमारे पास इंटरफेस दूसरे इंटरफेस इंटीग्रेशन के बाद या एक कंपोनेंट है लिंक्ड कैसे हैं. आप माउस का क्लिक करते हैं एक स्टार्ट मेन्यू पे, वो जो है ना किस चीज को एक्टिवेट करता है और किसकी स्टेट्स चेंज करवाता है, अपडेट करवाता है. So all this is in interface testing. So you can go through this. This is very easy. Interface testing में test cases हैं हमारे पास different, assuming, and then we have I mean interaction of all these interfaces. हमारे पास हम assume करते हैं कि components interface में A, B, C हैं. So how these are linked? Like या फिर जो example मैंने बताया कि भाई start menu पे mouse click किया आपने तो what appears, and then how that is redirected from one thing to another thing. Okay. Interface errors, interface misuse, interface misunderstanding, timing errors. So the interface misuse, a calling component calls another component and makes an error in its use of its interface parameters in wrong order. Sometimes I mean yeah, नॉट वीबी में का एग्जांपल अगर हम देते हैं कि आपने भाई कोई मिसाल के तौर पे दो बटन्स बना लिए, वो ठीक से काम नहीं कर रहा. फॉर एग्जांपल आपने ब्राउजर में देखे हैं कि दो एरोज हैं, फॉरवर्ड एरो एंड बैकवर्ड एरो. जरूरी नहीं है अगर आप जो इंटरफेस में फॉरवर्ड एरो है उसके पीछे जो है ना कोड आप बैकवर्ड का लगा दें तो डेफिनेटली क्लिक तो आप फॉरवर्ड पे कर रहे हैं, एक्चुअली जो है ना जो एक्शन हो रहा है वो बैकवर्ड की तरफ हो रहा है. सो interface misuse, and a calling component calls another component, makes an error in its use of its interface, parameters in the wrong order. Interface misunderstanding, or calling component embeds assumptions about the behavior of called component which are incorrect. Understanding, timing errors, the call and the calling component operate at different speeds, out of date information is accessed. So definitely different speeds होंगी, तो ये टाइमिंग एरर्स हैं, स्पेशली ये वेब बेस्ड में हो जाता है. Interface testing guidelines, design tests so that the parameters to a called procedure are at the extreme ends of their ranges. Always test
pointer parameters with null pointers, design tests which you cause the component to fail, use stress testing in message passing systems, in shared memory systems, vary the order in which the components are activated. Again, इसमें सिर्फ इनपुट जो डेटा की जो इनपुट है वो डिफरेंट है. आप ये देख के चेक कर रहे होते हैं कि डिफरेंट डेटा दे के हम स्ट्रेस टेस्टिंग कर रहे होते हैं. डिजाइन टेस्ट cause the component to fail. For example, different components ही डिजाइन बनाते हैं, कंप्लीट सिस्टम बनाते हैं. हम कहते हैं कि 3 किस्म के कंपोनेंट हैं, तो डेफिनेटली उनकी फंक्शनैलिटी देखेंगे ना. फंक्शन कंपोनेंट 1 इज गोइंग टू ठीक से डेटा भेज रहा है कंपोनेंट 2 के पास या नहीं, या कंपोनेंट 2 3 के पास या नहीं. System testing. System testing is a complete testing of a system. System testing during the development involves integrating the component to create a version of the system and then testing the integrated system. Focus in system testing is testing the interactions between the components. System testing checks that the components are compatible, interact correctly, and transfer the right data at the right time across their interfaces. System testing tests the emergent behavior of a system. So वही चीजें हैं, units, components हैं, इसमें units हैं, और फिर जो है ना आप सिस्टम है. सिस्टम आप सिस्टम्स हो सकते हैं, सब सिस्टम्स हो सकते हैं. एक एक चीज एक एक कंपोनेंट से लेके कंप्लीट सिस्टम तक ठीक काम कर रहा है या नहीं. वी वेरीफाई इन द सिस्टम टेस्टिंग. System and component testing we have already discussed. Use case testing previous chapter में हमने cover किया था. Test case driven from the sequence diagrams, वही है. use case related test policies हैं हमारे पास. हाँ, so the exhaustive system testing is impossible, so testing policies which define the required system test coverage may be developed. Examples of testing policies are all system functions that are accessed through the menus should be tested. Combination of functions, text formatting that are accessed through the system menu must be tested. Where user information input is provided, all functions must be tested with the both correct and incorrect input. So वही चीजें हैं टेस्टिंग वाली कि आपके पास आप एक छोटा सा प्रोग्राम भी बना रहे हैं, या एक प्रोग्राम्स 2-3 प्रोग्राम्स मिलके जो है ना एक यूनिट बना रहे हैं, तो उसमें आप सही डेटा भी गलत डेटा भी देख के चेक करते हैं. आप कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस को चेक कर रहे होते हैं, आप उस कंपोनेंट के फंक्शंस को चेक कर रहे होते हैं. टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट. Test-driven development is an approach to program the development in which you interleave testing and code development. अब टेस्टिंग जब भी हम कर रहे होते हैं, या कि कोड की टेस्टिंग हो या डिजाइन की टेस्टिंग हो, तो डेफिनेटली ये जो टेस्ट ड्रिवन अप्रोच है वो इंटरलीव ही होगी. समझिए ना, मिसाल के तौर पे आपके पास कंपाइलेशन के बाद एरर्स आ गए, तो डेफिनेटली एरर्स, एक एरर आप फिर कोड की वापस चले गए कोड के पास, तो डेफिनेटली यू लुक फॉर द एरर्स. एंड इसी अप्रोच को, चाहे वो फर्स्ट पेज ऑफ दैट कोड टिल एंड ऑफ द लास्ट पेज ऑफ द कोड, वो जाहिर सी बात है कि टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट में हम इंटरलीव अप्रोच ही apply होती है. Tests are written before code and passing the test in critical driver of the development. So critically analyze करते हैं हम, जो है डेटा जो है जो एक्सेप्ट हो ना हो, हर किस्म की डेटा दे के चेक कर सकते हैं. You develop the code incrementally along with the test for that increment. You don't move on to the next increment until the code that you have developed passes its tests. और जाहिर सी बात है कि ये एरर जब तक आप डीबग नहीं करेंगे तो आगे कैसे चल सकते हैं आप. Then test-driven development was introduced as a part of agile methods such as extreme programming. However, it can also be used in plan-driven development approaches.
सो टेस्ट ड्रिवन में हम मोस्टली जो चेक कर रहे होते हैं वो टेस्ट पास और टेस्ट फेल, ठीक है। सो अब हम आइडेंटिफाई द न्यू फंक्शनैलिटी, एक न्यू फंक्शनैलिटी हमने आइडेंटिफाई किया, वो इम्प्लीमेंट हुई। जाहिर सी बात है कि वो इम्प्लीमेंटेशन के बाद चल रही है, तो हम टेस्ट करने के लिए वी राइट द टेस्ट, देन वी रन द टेस्ट एंड चेक दैट पर्टिकुलर कंडीशन के वो ठीक से इनपुट दे रहा है, नहीं दे रहा है, या इनपुट गलत इनपुट उठा रहा है या नहीं दे रहा और नहीं उठा रहा, ठीक है। व्हाट इज द रिजल्ट? सो दैट इज द चेक कंडीशन इज I mean utilized there in that particular model, and that is going to give us the pass or fail. If it is the fail, implement functionality and refactor the design or refactor the code, and if it is passed, definitely we are going to take another functionality. So it's a simple cycle. Test-driven development process activities start by identifying the increment of functionality that is required. This should normally be small and implementable in few lines of code. Write a test for this functionality and implement this as an automated test, or other test along with all the other tests that have been implemented. Initially, you have not implemented the functionality, so the new test will fail. अब जाहिर सी बात है कि एक कंपोनेंट, एक टेस्ट है जो ऑलरेडी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तो नेक्स्ट लेवल वाली तो ऑटोमेटिकली अगर उसमें फॉल्ट प्रीवियस में है तो होगा। implement the functionality and rerun the test. Once all the tests run successfully, you move on implementing the next chunk of the functionality. वही है कि until and unless you are not finalizing that particular stage and you cannot move. अब कैसे, मतलब कि कुछ errors हैं इसमें, तो how we are moving, how we can move to the next level? We need to sort out those. We need to debug that particular errors. Okay. Benefit test-driven development, code coverage, regression testing, simplified debugging, system documentation. So code coverage, every code segment that you write has at least one associated test. So all code written has at least one test. Regression testing, regression test suite is developed incrementally as program is developed. Regression test में क्या है कि हम दो यूनिट्स हैं, ठीक है, इंटीग्रेट किए, पहले ठीक चल रहे थे, अब जो है इंटीग्रेशन के बाद ठीक चल रहे हैं या चेंजिंग के बाद ठीक चल रहे हैं या नहीं. सो लेट्स लुक. Regression testing is testing that the system to check changes have not broken previously working code. ठीक है. In a manual testing process, the regression testing is expensive, but the automated testing, it is simple and straightforward. All the tests are rerun every time a change is made to the program. The test must run successfully before the change is committed. वही चीज है कि हम, फॉर एग्जांपल, हम जब कोडिंग कर रहे होते हैं कि हमने एक छोटा सा फंक्शन इंप्लीमेंट किया, उसको हमने कंपाइल किया, ठीक से चला, तो दूसरा जो है ना हमने फंक्शन इंप्लीमेंट किया, फिर हमने जो है कंपाइल किया. अब जाहिर सी बात है कि दो फंक्शंस होंगे. जाहिर सी बात है कि रिग्रेशन टेस्टिंग में आप के to check the changes have not broken previously working code. जो पहले काम, जहां तक काम कर रहा था, कि वो ठीक से कर रहा है या नहीं अभी. और ये बार बार आप जो है ना थोड़ा सा ऐड करके फिर जीरो से स्टार्ट करें, फिर ऐड करके फिर शुरू से स्टार्ट करें, डेफिनेटली therefore it is saying that regression testing is expensive. Okay. Release testing. Release testing is the process of testing a particular release of a system that is intended for use outside of the development team. The primary goal of the release testing process is to convince the supplier of the system that is good enough for use. Release testing therefore has to show the system delivers its specified functionality, performance, dependability, and that does not fail during the normal use. Release testing is usually a black box testing process where tests are only derived from the system specification. So who is going to tell me the what differentiation between the black box testing and white box testing? We have already discussed this. And Ariba.
Alize. Hello, can you hear me? इन दोनों के नाम तो लिखें, अलीजे एंड अरीबा. सर जी, अलीजे, आर यू देयर? नहीं सर, मैं अरीबा बात कर रही हूँ. Okay, अरीबा, बेटा आप, what is difference between black box testing and white box testing? सर जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है ना, उसमें जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ना, या जो इम्प्लीमेंटेशन होती है, वो जो है ना टेस्टर को नोन नहीं होती. और जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है ना, उसमें जो मेथड जो होता है ना, वो सब कुछ नोन टू द टेस्टर होता है. एमन शमसी. यस सर. बेटा आप बता सकते हैं? सर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है या जो डिज़ाइन होता है, वो जो टेस्ट कर रहा होता है उसको नोन नहीं होता. वाइल वाइट बॉक्स टेस्टिंग में जो इंटरनल स्ट्रक्चर और डिज़ाइन होता है, वो नोन टू द टेस्टर होता है. Okay, सैयद मोहम्मद अहमद. यस सर, ब्लैक बुक टेस्टिंग में ये होता है कि जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं उनको चेक किया जाता है, लेकिन वो ये होता है कि जो टेस्ट कर रही होती है टीम, उनको वो चीज़ नॉन नहीं होती, जबकि वाइट बॉक्स में ये होता है कि उनको ये चीज़ें नॉन होती हैं, तो उनके लिए बेहतर हो जाता है. सलमान तनवीर. जो वाइट वाला होता है इसमें इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन उनको मालूम होती है, जो ब्लैक वाला होता है उसमें मालूम नहीं होती. मसलन कोई टेस्ट हो रहा है तो जो टीम है, टेस्टिंग टीम, उसे जो नहीं मालूम हो रही ना. नहीं, एग्जांपल देना कि मिसाल के तौर पे एक फंक्शनैलिटी है. जी. फंक्शनैलिटी काम कर रही है, वो ब्लैक बॉक्स से रिलेटेड है या व्हाइट बॉक्स से रिलेटेड है, कि काम कर रही है, कि कैसे बनी हुई है वो फंक्शनैलिटी. वी आर नॉट कंसर्न इन दैट पर्टिकुलर टेस्टिंग. तो दोबारा बताएं, समझ नहीं आई आपको बात. देखें, ओके, लेट मी लुक अदर्स. अली रजा. अली रजा. मोहम्मद मुबीन. यस सर. जी मुबीन, हाँ, सर थोड़ा सा एग्जांपल दे के समझाएं आप व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. सर ब्लैक बॉक्स में इस तरह होता है कि जो स्पेसिफिकेशन हमें, रिक्वायरमेंट्स हमें पता होती हैं, हम उसके जरिए टेस्ट करते हैं. उसमें हम टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या हुई है, कौन से प्लेटफॉर्म पे, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे, कौन सी लैंग्वेज और किस तरह ये फंक्शन यूज हुआ हुआ है, वो हम चेक नहीं करते, उसको टेस्ट नहीं करते. लेकिन व्हाइट बॉक्स में हम टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन भी चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं. जिस तरह आर्किटेक्चर डिजाइन को चेक करते हैं कि उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट हुई है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है. तो इस तरह व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स में टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन का फर्क होता है. Okay, good. So we were, yeah. So release testing is a form of system testing. An important difference is a separate team that has not been involved in the system development should be responsible for release testing. As I've told, why in release testing we involve the separate team, because this is the state where the customer and developers are going to finalize their that agreement, and that is going definitely that the third party is going to or the third team is going to efficiently play the role and provide and what we call it the consultants. आप देखते हैं कि सिविल वर्क्स में हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर है और
जो है अपना फॉर एग्जांपल सक्कर आईबीए में हमारे पास एक बिल्डिंग बन रही है, तो कॉन्ट्रैक्टर है और मालिक सक्कर आईबीए है, तो इसके बीच में टेक्निकली जो है हम सक्कर आईबीए अज्यूम करते हैं कि भाई या मैनेज नहीं कर सकता या टीम नहीं है, तो डेफिनेटली वी इन्वॉल्व द कंसल्टेंट्स, ओके, द थर्ड पार्टी। और मोस्टली द रिलीज टेस्टिंग में हम अगर टीम जो है डिफरेंट हो रिलीजिंग वाली, रिलीज टेस्ट करने वाली, तो डेफिनेटली वो इफेक्टिव हो जाता है, एफिशिएंट होता है, और उस पे कस्टमर जो है वो रिलाय भी करता है या उसकी जो है अप्रूवल मान लेता है। सिस्टम टेस्टिंग बाय, ये तो बड़ी लेवल के सिस्टम्स की बात हो रही है। अब जाहिर सी बात एक छोटा सा पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर है, उसमें अब जो है कहाँ क्यों हम इन्वॉल्व करवाएंगे एक थर्ड पार्टी को। The system testing by the development team should focus on discovering the bugs in the system defect testing. The objective of the release testing is to check the system meets its requirements and is good enough for external use validation testing. So, okay. रिलीज के बाद जो वैलिडेशन डेफिनेटली होती है कि वो आप फिर अपना कस्टमर के पास यूजर डेटा दे के वहां पे डिप्लॉय करने के बाद requirements based testing. A requirements based testing involves examining each requirement and development test as a result is a test or tests for it. The ment care का एग्जाम्पल है, requirements simply जितनी भी requirements है उसको हम चेक कर रहे होते हैं। requirements test का एग्जाम्पल आप खुद देख लें, मेंट केयर का है, स्टेप बाय स्टेप। Features tested by scenario, the authentication by logging on the system in that particular previous scenario जो मेंट केयर का था, downloading the uploading of the specified patient records to a laptop, home visit scheduling, this encryption and decryption of the patient records, record retrieval and modification, links with the drugs database that maintains the side effect information, the system for call prompting, performance testing है उसके बाद। The part of release testing may involve testing with the emergent properties of the system such as performance and reliability. Tests should reflect the profile of use of the system. Performance tests usually involve planning a series of tests where the load is steadily increased until the system performance become unacceptable. Stress testing is a form of performance testing where the system is deliberately overloaded to test its value or behavior. परफॉर्मेंस टेस्ट वही है कि परफॉर्मेंस हम एक्सट्रीम डेटा देख के चेक कर रहे होते हैं। परफॉर्मेंस टेस्ट का एग्जांपल हम जो कि मॉडल व्यू कंट्रोलर में टॉपिक में हमने कवर किया कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है अपना वेब सर्वर है और उसके पास हम HTTP रिक्वेस्ट भेजें, उसकी जो जितनी कैपेबिलिटी है उससे डेफिनेटली वो फिर अपना वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं। ओके, सो व्हाट वी कॉल इट द स्ट्रेस टेस्टिंग। टाइप्स ऑफ यूजर टेस्टिंग हमारे पास अल्फा टेस्टिंग है, बीटा टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अल्फा, you know that user of the system, user of the software work with the development team to test the software at the developer side. Beta testing, a release of the software is made available to users to allow them to experiment and raise the problems that they discover with the system developers. Alpha testing का भी आप लोगों को पता है कि हम यूज करते हैं अपना कमर्शियल ऑफ द शेल्फ का अल्फा टेस्टिंग, अल्फा वर्जन्स आते हैं, सुनते हैं आप लोग कि भाई विंडोज फ्लांग जो है उसका अल्फा वर्जन आ गया है, और या फिर सॉरी बीटा का वर्जन आप जो है अपना बीटा वर्जन फिर आप कुछ टाइम दे देते हैं, महीना है, 1.5 है, 2 है, 6 महीने है, साल है, वो यूज होता रहता है, उसमें से फीडबैक आता है, प्रॉब्लम्स होते हैं, और वो फिर जो है फाइनल वर्जन बाद में आ जाता है, क्योंकि ये एक्चुअल यूजर की डेटा देख के चेक किया जाता है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, कस्टमर्स टेस्ट, ये भी वही है कि customers test a system to decide whether or not it's ready to be accepted from the system developers and deployed in the customer environment, primarily for custom systems.
एक्सेप्टेंस टेस्टिंग प्रोसेस में हमारे पास डिफाइंड एक्सेप्टेंस टेस्ट क्राइटेरिया is definitely that is planed. Then we have the plain acceptance testing, and test plain is then we implement though that plain what we call it the drive the acceptance tests, and then that is those tests are run acceptance tests. Then we have the after running those tests we have the results, and then in results we have the negotiation, because acceptance में हाँ भाई ये implement ये specifications मिली थी वो implement हुई है या नहीं, अच्छा ये हो गई ये नहीं हुई, अभी तो जाहिर सी बात है हैंड ओवर करना है ना, डेटाबेस काम नहीं कर रहा, ऑनलाइन नहीं है डेटाबेस, ठीक है, ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो फिर नेगोशिएशंस होती है कि हाँ भाई ये हम बाद में करके देंगे, नहीं दिए कर सकते, पैसे काटने हैं, क्या करना है, whatever the negotiations you have, that then we have the reporting testing reports are there. So stages in the acceptance testing process: define the acceptance test criteria, plain acceptance test, drive acceptance test, run acceptance test, negotiate the test results, and reject or accept the test. So these are the stages which were previously given in that figure, that picture, slide number 60. Okay. Then we have the agile methods and acceptance testing. In agile methods, the user or the customers is a part of the development team, and as we know that is responsible for making the decisions on the acceptability of the system. Tests are defined by the user customer and are integrated with the other tests, in that they are run automatically when changes are made. There's no separate acceptance testing process. In agile, main problem here is whether or not the embedded user is typical and can represent the interest of all the system stakeholders. जब customer on the site होता है तो definitely वो हमें feedback देता जाता है, तो हम अगली stages की तरफ जा रहे होते हैं agile में, तो definitely उसमें हमें acceptance test की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, एक छोटे से unit से लेके complete system तक customer is at the site in agile. Okay, so this was all about the today's class, guys. If you have any questions, please, I'm available. Sorry, I mean, for today's class, we went in little bit of speed because we are left with only 10 days to cover remaining these 2 to 3 chapters. Now we are, after this, we are at, fine and average speed. This was the only class. I'm so sorry we went in speed. I'm available for the... सर सर आपने वो पेपर चेक किए थे सर? बस 2-3 रहते हैं. I'll upload on CMS tomorrow or tonight. ओके सर, थैंक यू सर. Thank सर you ये so कोई much. मसला नहीं है सर, वैसे भी सर रह जाता कोर्स तो बहुत बुरा होता. हाँ ना, और एक्स्ट्रा क्लासेस फिर सबको ग्रुप में लेना, तो then now we are fine. Okay guys. Yes. Okay, so Sohail, kindly upload this on Dropbox or any cloud, this link, recorded lecture, and kindly share with Vakar. Maybe Vakar is I did in or forward me to me. I'll upload on LMS. Thank you so much, guys. See you inshallah next week. इंशाल्लाह. अरे ये लास्ट क्लास थी क्या सर की? नहीं क्यों भाई, अभी तो हैं हमारे 2-3 चैप्टर्स रहते हैं. सर मैंने सुना 25 तक खत्म हो जाएगा सिलेबस. देखें 25 तक सिलेबस हम कोर्स आउटलाइंस बेस्ड हैं भाई, एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत पड़ी भी हम देंगे, हमारे 3 रहते हैं. अच्छा सर, सही है, ठीक है सर. फिर